नमस्ते। नमस्ते। ज़ेल हॉस्पिटल द्वारा आयोजित इस एफबी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंदा, उम्मीद करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर स्नेहाशीष। डॉक्टर स्नेहाशीष, यस। डॉक्टर डॉक्टर स्नेहाशीष एक एमबीबीएस डीडीवीएल है और पिछले 5 सालों से एक चर्म रोग विशेषज्ञ के रूप में अनेक लोगों का उपचार किया है। सर, हम लोग क्विकली हमारे सेशन की ओर बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल ये होगा कि बालों का झड़ना क्या है? सो बालों का झड़ना और एलोपेशिया एज वी कॉल इट इन डर्मेटोलॉजिकल टर्म्स, बेसिकली जब दिन में 100 से ज्यादा बाल झड़ते हैं इन एग्जैक्ट काउंट, तब हम उसको एलोपेशिया या बालों का झड़ना बोलते हैं। ओके सर। सर, बालों के झड़ने के क्या प्रकार होते हैं? तो बालों के झड़ने के प्रकार कई तरीके के हैं। सो द मोस्ट कॉमन वन, सबसे जो कॉमन है, इज androgenetic alopecia or female pattern baldness, which is caused due to hormones as well as genetic predisposition. ये अपने जैसे किसी का परंपराओं में, लाइक मम्मी पापा या सेकेंड ग्रेड रिलेटिव में अगर होता है, तो इंसान को होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली हम लोग मेल्स इन द इन 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 मेल इंडिविजुअल व्हाट वी सी इज दैट देयर इज अ रिसेशन इन द हेयर लाइन फ्रॉम द फ्रंट एंड व्हिच प्रोग्रेसेस टू involve the center as well as the sides, and ultimately थोड़ा सा पीछे का बाल ही रह जाता है in case of males. So that is a classic androgenetic alopecia. In case of females, महिलाओं में जो दिखता है वो तो सेंट्रली प्रोमिनेंट एलोपेशिया का पैच, जैसे यहाँ से सीधा वो इनिशियली दिखता है एंड देन इट प्रोग्रेसेस साइडवेज। सो दैट इज कॉल्ड अ फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। ये सबसे कॉमन होते हैं। इसके बाद आता है टेलोजन एफ्लूवियम, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी या कोई बड़ी बीमारी के 3 महीने के बाद जनरली हम लोग दिखते हैं, 3 to 6 months गैप में, because that is the time in which our hair cycle really occurs. उसमें हम लोग बाल जाना देखेंगे ऑल ओवर द स्कैल्प, लाइक पूरा स्कैल्प इन्वॉल्व होता है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। एंड बेसिकली इट कैन बी रिवर्स्ड, इसकी कम हो जाती है अगर बराबर न्यूट्रिशन और जो इंसाइटिंग फैक्टर, जो फैक्टर्स की वजह से बाल गिरना चालू हुए थे इन द फर्स्ट प्लेस, इफ दोस फैक्टर्स आर एड्रेस्ड, बाल गिरना फिर रिवर्स हो जा सकता है। द थर्ड टाइप विच वी सी इज इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो दिखता है एलोपेशिया एरियाटा, जो पैचेस में आते हैं, सडन ऑनसेट होता है, 1-2 दिन में शुरू हो जाता है बाल गिरना, इट कंटिन्यूज फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड देन इट कैन रिजॉल्व ऑन इट्स ओन और इट कैन प्रोग्रेस एंड इट हैज टू बी एड्रेस्ड अकॉर्डिंगली। ओके सर। सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बालों के झड़ने के लक्षण और संकेत क्या है? तो बाल झड़ने के लक्षण विल डिपेंड बेसिकली ऑन द टाइप ऑफ एलोपेशिया वी आर एड्रेसिंग। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, उसमें बाल पैटर्न वे में झड़ता है। तो हमें फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि हेयर लाइन हमारा जो है वो रिसीड कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। द फर्स्ट साइन of hormonally related alopecia that is happening. In case of telogen effluvium, what we'll see is that after the inciting इवेंट और द इंसल्ट, कोई बड़ा बीमारी के 2-3 महीने के बाद सडनली बहुत ज्यादा बाल झड़ना ऑल ओवर द स्काल्प। हम लोग जब नींद से उठ रहे हैं, पिलो में बाल, व्हेन वी आर ड्राई वॉशिंग आवर हेयर, we see a lot of hair on the floor of the bathroom. So these are the things which we will see, the subtle signs of alopecia. In case of alopecia areata, we will see sudden graying of hair. एक जगह में बाल suddenly सफेद हो जाता है एरियाटा में and then वो बाल निकलना चालू हो जाता है. So that's how the commonest types of hair fall will manifest initially. You're on the mute. हेलो।
Yes. सर बाल झड़ने के क्या कारण हो सकते हैं? अगेन बाल झड़ने के कारण ऑब्वियसली डिपेंड अगेन ऑन द टाइप ऑफ द एलोपेशिया. जो मैंने एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोला, इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स. लाइक मेरे रिलेटिव में, मेरे पूर्वजों में कितना चांसेस है वो बाल झड़ा था, उस टाइप के टाइम पे अगर बाल झड़ता है तो मुझे भी चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर मम्मी पापा को बाल वैसे उस तरीके से गया है, द पैटर्न baldness which I just discussed, if that has occurred in my first degree relatives and in my parents or in my siblings, अगर वैसा होता है तो मुझ में होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. एंड द प्रोग्रेशन इज ऑल्सो फास्टर. जैसे अगर से सपोज एक इंडिविजुअल के पापा को ग्रेड 1 to grade 7 में जाने में प्रोग्रेस करने में 20 साल लगा होगा, तो उसके बेटे को इट विल टेक अराउंड 10 years or less to progress. So that genetics definitely play a very very important role in alopecia. Other than that, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस, पर्टिकुलरली आप वेजिटेरियन हैं या आपके पूरे खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं रहेंगे, तो टेलोजन एफ्लूवियम, जो मैंने सेकेंड टाइप ऑफ हेयर लॉस डिस्कस किया, दैट उसका होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. अगेन तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है बालों का झड़ना इन केस ऑफ एलोपेशिया एरिएटा, ये होता है हमारे अंदरूनी जो इम्यून सिस्टम है उसका डिसरेगुलेशन की वजह से हो सकता है. कि हमारे जो श्वेत कोश है वो जाके अपने हेयर के स्टेम सेल्स को जब अटैक करते हैं तो उससे बाल गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये बेसिक कॉजेस होते हैं हेयर लॉस के. इसके बगैर भी अदर कॉजेस है which we can discuss when such cases arise. राइट सर, राइट. सर तो ये तो बात हुई बालों की, बट अगर त्वचा की बात करें तो हमें अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रखना चाहिए सर? So त्वचा का ख्याल will be very much dependent on the type of skin you have. By त्वचा का ख्याल what I assume is that आप चेहरे का बात कर रहे हैं. So depend when you have dry skin or whether you have oily skin or you have a mixed complexion. जिनका ड्राई स्किन है उनका स्किन जनरली ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो a regular moisturization is very very essential. The type of moisturizer and the duration and the frequency with which you are supposed to apply the moisturizer will depend on basically the kind of infection you have or have not. कि आपको दूसरा कुछ बीमारी है या नहीं, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपका ड्राई स्किन का आप ख्याल कैसे रख सकते हैं. लेकिन आपका स्किन अगर चमड़े का रूखा है तो मॉइस्चराइजेशन इज अ मस्ट, अदरवाइज there's a high chance that you'll land up with some kind of skin affection. If your skin is oily, what you get very commonly is acne. तो acne, जिनका acne prone skin है उनको skin clean रखना, wash it with a salicylic acid based face wash and proper skin consultation when and if an acne arises. So that is very very important. For mixed complexion skin, it has to be tackled in accordance to the season and the seasonal changes with which the skin will go through. So that is highly variable for our mixed complexion skin. जी सर, तो अभी आपने जिक्र किया था मुहासे का, तो सर मुहासे क्या होते हैं? मुहासे बेसिकली अराइजेस बिकॉज हमारे स्किन में जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, वो जब when it basically gets clogged, it can get secondarily infected and that's how we end up with pimples जो बाद में जाके pustules, it is पीप भर के फोड़ी हो जाते हैं, कुछ दाग बना देते हैं, स्कार बना देते हैं. So it's basically it occurs because of there is a blockage in the sebaceous glands and further accumulation of sebaceous secretions which then later become secondarily infected. ओके सर, सो मुहासे होने का बेसिक रीजन क्या होता है सर? क्यों होता है मुहासे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुहासे होने का रीजन पुरुष और महिलाओं में जरा सा फर्क है. पुरुषों में जनरली हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग टीनेज इयर्स वी सी there's too much of acne, particularly starting from the age of 14, 15, right up to the mid-adulthood to 25 years of age. That is because the androgens which gets produced in bulk during this period of time, it causes sebaceous hyperactivity. कि sebaceous gland का तेल secrete करना बढ़ जाता है और उसके वजह से अगर तेल properly चेहरे के बाहर नहीं आता है, when there is a blockage to the secretion,
then what happens, the sebaceous secretion they get accumulated in the skin and then it gives rise to the acne. फीमेल्स में महिलाओं में एक्ने होने का चांसेस is less, but when it occurs, a detailed hormonal analysis has to be done. कोई हार्मोन के ऊपर होना या नीचे होने से ये एक्ने होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. जिन महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम है या पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनमें एक्ने होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. ओके ओके सर, सो ये मुहासे जो होते हैं उनका कोई इलाज होता है? यस डेफिनेटली. मुहासे के जो इलाज है इट इज मल्टी डायमेंशनल. हम लोग दवाई से कर सकते हैं, क्रीम्स, certain procedures and machines. So it will depend on which stage the pimple is. कौन से stage में आप present कर रहे हो? Is it in a comedone stage, papule stage, pustule stage, or is it in a scarring stage? So all this will depend, would dictate rather the modality of treatment that has to be taken. So yes, definitely इनके treatments बहुत है, but मैं जो सलाह आपको लोगों को देना चाहूँगा कि आप खुद से treat करने की कोशिश ना करें. कोई चर्म रोग स्पेशलिस्ट से ही अपना मुंह से ट्रीट कराए if you don't want any subsequent scar or pigmentation that is going to be permanent on your face. सो डॉक्टर का कहना है आप खुद डॉक्टर मत बनिए, प्लीज डॉक्टर के पास जाइए और उनका इलाज करवाइए. सर, सो वी आर डन विथ आवर क्वेश्चंस. वी डू हैव व्यूअर क्वेश्चंस, प्लीज. Yes, please go ahead. ऑलराइट, सो हर्ष बावसर इज आस्किंग किस विटामिन की वजह से बाल झड़ते हैं? So it will depend. Any and every micronutrient, that is vitamin and mineral deficiency, can cause hair loss. What we see is vitamin D, zinc deficiency, B12 folate deficiency are the most common causes of alopecia. कि जो normal common vitamins होते हैं, A, B12, folic acid, zinc, iron, ये सब की कमी से बाल झड़ सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सैमुअल जॉन is asking बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? So that is a very vague question. बालों की देखभाल will depend on again what problem you have. Overall, how to go about it is that you have to take care when your hairline is receding. First of all, अगर hairline recede हो रहा है तो immediately you should approach a dermatologist because अगर आपके बालों में बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, जितना जल्दी उसको एड्रेस किया जाएगा उतना इजीली उसको ट्रीट किया जा सकता है. अदर देन दैट, इफ यू हैव an oily scalp or a dry scalp, the treatment has to be accordingly. You will need a ketoconazole based shampoo if it is oily. If it is dry, you will need a conditioner or a moisturizing shampoo. But overall, आपका बालों का प्रॉब्लम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको बालों का कैसे देखभाल करनी चाहिए. ओके सर. सर, मेरा एक सवाल ऐसा है कि बालों के झड़ने के मतलब बाल अगर झड़ते हैं तो उसका इलाज क्या होता है? या घर पे हम लोग अगर बाहर नहीं जाते हैं या कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेते हैं तो घर पे कोई घरगथ्थू इलाज ऐसा होता है जो हम कर सकते हैं या एडवाइजेबल है करना? नॉट रियली, नो. अगर एलोपेशिया आपको स्पेसिफिकली है, अगर 100 के बाल ज्यादा गिरता है, देयर इज नथिंग मच होम रेमेडी यू कैन डू. It will only depend on the type of alopecia, as I've said earlier, because hair fall is something that is linked to your internal health. Agar if it is telogen effluvium, you cannot possibly do anything on your scalp to really reverse that. If it is androgenetic alopecia, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते खुद से to reverse that. If it is again alopecia areata, you can't do much. You have to come because the treatments again will differ. It will be either an oral treatment कि कुछ दवाई दे दे या कुछ लोकल ट्रीटमेंट टॉपिकली कुछ लगाना होता है which are basically steroids or minoxidil depending on the type of the hair loss, or we do injectable treatments whether it's platelet-rich plasma therapy, mesotherapy. So all of this will require a considerable expertise and experience, and no amount of home remedies can really address the problem of hair fall if it is significant. Okay sir. And sir, one last question. मुहासे होते हैं तो उस पे मतलब कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? Well, obviously, if you have an acne prone skin, अगर आपको मुहासे आते हैं, first of all, you have to take care of the diet. Basically, खाने में ज़्यादा तेल नहीं, घी नहीं,
Hello, am I audible? I Yes, think sir. there was a Please go ahead, sir. yeah. So खाने में तेल घी की कमी होनी चाहिए, चीनी के जगह कुछ शुगर रिप्लेसमेंट, दूध की जगह दही, and weight reduction in case of females because PCOS is linked with a metabolic syndrome and obesity. So all those needs to be taken care of. Along with it, washing your face twice a day, keeping the face oil free is absolutely essential. अगर चमड़ी dry हो रहा है with the skin treatments, a proper moisturization and sunscreen, which is matte finished and non-comedogenic, also will be essential. तो इट इज मल्टी मॉडल बट ऑब्वियसली आपको डाइट आपका लाइफस्टाइल हैज टू बी हेल्दी एंड देन योर स्किन विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली Right, sir. Right, right. Right, sir. So we are done with our questions, and we are done with our viewer questions as well. You have any other information to give? Like you want to share any other information with our viewers? So basically not much. What we see in the lexicon of skin disease in this country is that हर कोई डॉक्टर बन जाता है, खुद से ही चीजें ओवर द काउंटर लेके लगा लेते हैं, particularly steroid abuse which I see not only in pertinence to acne or any other skin diseases. तो मेरा सलाह वही होगा कि अपने आप खुद जाके ओवर द काउंटर मेडिकेशंस एंड प्रोसीजर्स ना करें, डॉक्टर की सलाह ले, प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए एंड जाके उनकी सलाह के हिसाब से आप ट्रीटमेंट करवाइए. नहीं तो द amount of damage you can do with the over the counter steroids on your face is lifelong and irreversible. चमड़ी का बहुत डैमेज हो जाती है. तो मेरी विनती है आप लोगों से कि प्लीज डू नॉट ट्रीट योर स्किन डिसऑर्डर्स बाय योरसेल्फ और through the reference of some pharmacist or someone who is not qualified to treat your skin. राइट सर, राइट. मुझे और एक इन्फॉर्मेशन आप सबको देनी है. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, प्लीज मेंशन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड विल श्योरली गेट बैक टू यू. सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू सो मच, सर. थैंक यू. You're welcome. Thank you. Thank you so much.